प्यारी, बहुत ज्यादा, बहुत प्यारी बातें। अच्छी बुरी मीठी तीखी बातें 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 विद दिव्यांश राणा। तो हेलो नमस्ते, एक बार फिर से यू आर वॉचिंग बातें विद दिव्यांश राणा। आज जो हमारे गेस्ट हैं बहुत कमाल के एक्टर हैं, ताहा शाह बदुशा नाम है उनका। थैंक यू। कैसे हो आप? मैं बहुत ही बढ़िया हूँ और यहाँ पे बातें विद दिव्यांश राणा के साथ हूँ एंड ही इज़ लाइक अ लिटिल ब्रदर टू मी नाउ। ही इज़ वेरी टैलेंटेड और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ही इज़ ऑलवेज विलिंग टू लर्न एंड अब्जॉर्ब, जहाँ तक मैं इनको जानता हूँ। सो आई वुड लाइक टू से आई लाइक दिस काइंड ऑफ पीपल, आई लाइक यू एंड आई होप दैट यू गो रियली अहेड इन लाइफ। कोई आपकी ऐसी तारीफ कर दे पहले ही तो फिर आप नर्वस हो जाते हो, पर नहीं, मेरे को सच में बहुत अच्छा लगते हो भैया आप, इसलिए मैंने आपको बुलाया। और अच्छे लोगों में दुनिया में जो होते हैं ना, अच्छे लोगों के साथ अच्छा होता है। तो मैं आपको जब भी लाइफ में कुछ नया करते हुए देखता हूँ तो आई एम लाइक यार अच्छे बंदे के साथ अच्छा हो रहा है। थैंक यू। कैसा रहा आपका दिन आज का? बिजी। क्या कर रहे थे आप? यार सुबह सुबह तो मैं भाग के मैं जिम गया था 2-3 घंटे के लिए। उसके बाद फिर हम लोग तैयार होके, एक शूट था हमारा द डोर मैगजीन के लिए, तो वहाँ पे बहुत मज़ा आया। वी गॉट कुछ एक्सपेरिमेंटल शॉट्स लिए, कुछ आग के साथ, कुछ फॉयल पेपर के साथ, तो इट वाज, और स्टूडियो भी काफ़ी अच्छा बनाया था उन्होंने। तो आई वी एंजॉय द शूट। उसके बाद फिर डायरेक्ट तेरी बाहों में। क्या बात, बाहों में तो नहीं हो आप, पर ठीक है। बचपन से एक्टर बनना था या कुछ ऐसा था कि? यार बचपन में मुझे क्या बनना था, मतलब 4-5 साल वाला लड़का होता है, 9-10 साल वाला लड़का होता है, यू नो, वो स्क्रैप बुक्स होते थे ना पहले। हाँ। सो जब मैं बोर्डिंग स्कूल में था, जब मैं 4th, 5th और 6th ग्रेड में था, तब एक लड़की हुआ करती थी सारंग। शी वॉज फ्रॉम कोरिया एंड शी हैड दिस स्क्रैप बुक जो हम सब ने एक एक करके हमने भरा था। तो उसमें आई वॉज इन 4th ग्रेड, आई रिमेंबर आई सॉ द स्क्रैप बुक, शी सेंड इट टू मी। तो हमने देखा था कि व्हाट डू यू वांट टू बिकम, एंड इट सेड दैट I want to be a nice guy. That was my dream. That was literally my dream. I want to be a nice guy. Okay, and who do you follow? I don't believe it, but I actually wrote it that it was, you know, Shah Rukh. I don't even believe that I actually liked him at that point of time because I didn't watch many of his movies. और 5 साल का बच्चा है ना। Exactly. पर मुझे लगता है एक मेरा बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था अंशु, और वो ना बंदर जैसा था। वो he would jump from anywhere, he would, you know, jump from tree to tree, बिल्कुल बंदर था। तो उसका फेवरेट एक्टर शाहरुख खान था। तो आई थिंक बिकॉज ही वॉज माई काइंड ऑफ बेस्ट फ्रेंड, और मैं उसके जैसा, आई डोंट नो, आई गेस आई वांटेड टू बी अ मंकी टू। तो आई स्टार्टेड लाइकिंग व्हाट ही यूज्ड टू लाइक, एंड that's how I got into physical activities. उनको देख के ना अलग अलग, क्या बोलते हैं, ये कुछ अलग कर रहा है, मेरे को भी ये करना है। हाँ, अलग भी कर रहा है, पर स्पोर्ट्स में, you know, that small little incident in 3rd or 4th grade, it changed my personality. क्योंकि पहले मैंने कभी स्पोर्ट्स खेला ही नहीं था। जब मैं अबू धाबी में था, तो वहाँ पे हमें ज़्यादातर यानी पढ़ाई के लिए हमें मारा करते थे, यानी स्पोर्ट्स तो था ही नहीं अबू धाबी में। या it was an Indian school, Sherwood Academy. I love that school. I love the teachers and everything now. Okay, but looking back, of course, to discipline us, और मैं पढ़ाई तो करता नहीं था उस वक्त, so I understand why they had to do what they had to do. But वहाँ पे स्पोर्ट्स नहीं था। और जो कोडेकनाल इंटरनेशनल स्कूल KISS, जहाँ पर मैं था बोर्डिंग स्कूल के लिए, it had every sport. आप जो स्पोर्ट बोलो वहाँ पे था। And it had track and field, it had javelin throw, it had shot put, it had basketball, football, hockey, name it. And you know, that kind of school kind of makes you like an all-rounder. With music, they also teach you music, they teach you singing, they teach you dance, they teach you gymnastics. It was a full-rounded school. कि पता भी नहीं लगता आप सीख रहे हो धीरे धीरे ये सब चीजें। हाँ, और आपको करना होता है, enjoy, बिल्कुल। And मैं ही नहीं, मतलब और हमारे स्कूल में ना हमें यूनिफॉर्म नहीं पहनना पड़ता था। यार कितनी बेस्ट बात है। हाँ, so we were always wearing whatever we wanted. Of course, at that time I didn't have any style. मम्मी यहाँ तक पैंट पहना देती थी. I think that was we used to just wear baggy pants, loose pants, and then try to be cool. But आपने कभी वो नहीं किया होगा ना, लेकिन भाई के कपड़े पहने हैं, वो सब नहीं होगा ना? नहीं, भाई के कपड़े तो बहुत पहने हैं यार, क्योंकि बट मेरा भाई ना बहुत बड़ा है। मतलब जब एक ही साल का, क्या मतलब डिफरेंस है? 2-3 साल में 3-4 साल का गैप रहता है। एक साल का गैप था। अच्छा, फिर तो। पर वो मुझसे 1 फुट ज्यादा बड़ा था। मामा ने ज्यादा खाना खाया था जब वो पैदा हो रहा था, मेरे लिए कम।
So when he and me were standing together, he was always like 1.5 foot above me, and he was a big made guy and big boned. But तो यहाँ उसके कपड़े तो मुझे 3-4 साल तक आते थे, तो वो मेरी किस्मत खराब थी कि मेरा ओवर साइज पहले से शुरू था। बिल्कुल। आपको ना लोग पता क्या देखते हैं, जब भी ऐसे ताहा शाह का नाम आएगा कहीं पे, लोग भी यार एक्टर अच्छा है, क्या एक्टिंग करता है, मतलब लोग आपको उस कैटेगरी में डालते हैं। मनोज वाजपेयी, पंकज त्रिपाठी सर, आयुष्मान खुराना, डालते राजकुमार, हैं, क्या बात है बिल्कुल भाई, डालते हैं। तो आपके लिए वो एक्टिंग टिप एक बेस्ट की यार, ये ना मेरा एक सीक्रेट है एक्टिंग का, कि जो लोग देख रहे हैं उनके लिए लाइफ टाइम काम आए। लाइफ टाइम टिप यार, पहले तो अगर मैं यहाँ पे एक्टर्स को नज़र में रखे अगर मैं कुछ बोलूँ, तो मैं बोलूँगा कि ये लोग पढ़ाई नहीं करते एक्टिंग के बारे में। दे आर वेरी हाँ, अगर मैं ज़्यादा प्रैक्टिस करूँगा या करूँगी तो मेरी स्पॉन्टेनिटी निकल जाएगी, अगर मैं इस पे ज़्यादा मेहनत करूँगा तो आई वॉन्ट बी इम्पल्सिव। तो ऑल दीज डजंट मेक सेंस टू मी। आई बिलीव दैट एजुकेशन always makes you a thinking actor, and if you अगर एक बार आप एक thinking actor बन जाते हो, तो you not only think about how I should say this line, it's वो है ही नहीं, मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, मैं वैसे भी बोल सकता हूँ, पर ये acting है ही नहीं। It's about listening to the other person and how is उसका सुर कैसा है, उसके जो last सुर है, उस सुर को सुन के you need to be able to pick that up and either take it down or take it up or give it back straight. You know what I mean? And that is just one filter. Then there are intention. There's a book, it's called Live with Intent by he's a coach of Leonardo DiCaprio. He does courses all around the US. I forgot his name at the moment, but he'll come to me. So anyway, he has a book called Live by Intent, and in that he mentions कि जब भी आपके पास एक थॉट हो, एक वन थॉट, तो that one thought has a certain intention of what you want from the other person. It is not about how you want to say the line, it's about what you want from the other person, right? And that is very important. You need to keep that in focus, because आपके आजू बाजू लाइट वाइट कैमरामैन बहुत सारे लोग होंगे, but you need to focus on that person's eyes, build like a vacuum between both of you, and then be able to convey with that intent of what you want from that other person, whether it be good, bad. Like right now, let's say I want something like this, right? You see, you're giving it, so I just have to do, but this is a gesture. My intention was, okay, I want something, so that's my need, I want that. How do I get it from you? If you don't want to give it to me, then I'll have to try a different approach. अभी मैंने पूछा, तूने दे दिया, पर अगर तूने नहीं दिया तो व्हाट्स माय नेक्स्ट थिंग, तो फिर मैं उठ के लूंगा, अगर तूने वापस ले लिया तो मैं उठ के वापस वहां से आऊंगा। सो दैट इज मेरा इसको लेना है मुझे, एग्जैक्टली, सो दैट्स माय ऑब्जेक्टिव। सो इफ यू हैव दैट इन योर माइंड, तो फिर वहां से फिर चीजें शुरू होती है, आपकी एक्टिंग शुरू होती है कि व्हाट डू आई वांट, नॉट हाउ डू आई वांट टू से इट, राइट? सो देयर इज वेरी डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स, एंड ऑफ कोर्स इसमें भी बहुत सारा एजुकेशन है, बहुत सारे माइन्यूट डिटेल्स हैं, तो दैट कैन गो ऑन फॉर एवर। आई मीन टेक्निक्स और किताबें इतनी हैं एक्टिंग के बारे में कि आप जितना पढ़ो कम है और अपने अपने तरीके हैं सबके। या और एंड ऑफ द डे एक एक्टर के लिए स्पेंडिंग टाइम विद देमसेल्व्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। बीइंग एबल टू बी प्रेजेंट ओवर हियर राइट नाउ एंड ऑल्सो बी एबल टू सी माई सेल्फ as an outer body experience. Do you understand what I'm trying to tell you? So you're here, you're inside, but you're also observing yourself from outside. कि मैं कैसा दिख रहा हूँ या मैं No, see that's the thing. कैसे दिख नहीं रहा हूँ. That should never be in an actor's mind. People who think too much about मैं कैसे दिख रहा हूँ. मेरा character Then you think about, oh मेरा ये profile अच्छा नहीं है, oh मेरा double chin है, oh मेरा makeup That is not even the intent. Nobody gives about that. If you are true to that intention and your breath, and you are just here and you're focusing on that one person, everything else disappears. क्या आप उस character में कितना हो? It's not about the character. It's about how present you are as an actor. Presence. At that time. Yeah, mindful. You know, there was something that my teacher told me कि
you should listen to the other actor, na? तो लोग सुनते हैं. But it's not just about listening. What the word actually is, it's called sensing. So just in case right now, if I had something in my hand and while talking to you, it dropped, and maybe you would go and pick it up. But if you were not a present actor and it was a shot going on, I might have said, cut, by mistake, galti ho gayi. But the galti is the magic. You understand? The magic comes from those mistakes. वही तो X Factor बना देगा ना आपके शॉट में. Yeah, it's unexpected, right? You yourself didn't expect that. So the audience cannot expect it because you never expected it. And it happened. But when it happens, you can't cut. You have to be able to take that and move on with the scene. हाँ, और वो अलग भी लगेगा सबसे. Yes. Correct. That's very, you need to be present as an actor. You need to be very confident with your lines, very confident with your intentions, your objective, your super objective, with everything. You're so confident. These things are just passing by. Yeah, because then you're the character. When you're not thinking about being the character, you're the character. Correct. Right. So that is a lot of practice. And it doesn't happen by मैं set पे जाके मैं पढ़ लूँगा. ऐसा तो होता ही नहीं है. मेरे तो नहीं होता भाई. There might be brilliant actors. I'm not that brilliant. वो भी कर करके ही आज बोल पाएंगे शायद कि हम कर लेंगे. It's like those smart kids in school. Smart kids, वो लोग बोलते हैं कि वो पढ़ते नहीं है. पर फिर भी उनके marks आते हैं. Correct. Right? Because somewhere they're doing the hard work. Somewhere. कि दिखता नहीं पर हम लोग कर रहे हैं. They're doing it, but they want to show that they're not doing it. But I don't believe, that you can achieve anything in life without hard work. You can be smart. You can be faster than other people. But work is work, and your mind and your focus and your concentration has to be there. It is not possible. Maybe your concentration is better than other people. That's why you can pick up things faster. But without these basic ingredients, जहाँ पे आपका focus नहीं है या concentration नहीं है, nothing. कुछ नहीं होगा. Nothing will happen. You're so focused in poetry, right? Yeah. Your mind thinks about, beauty, it thinks about poems, it thinks about all those Comparisons. Yeah, I guess Everything. however you write your poetry, and that makes you special. That makes your mind focus in that direction. But if I tell you come and focus in, like, I like gymnastics, maybe you might not be that focused in gymnastics, right? Correct. So everybody's got, but जिस subject में आपको अच्छा लगता है, आपका पूरा focus, आपका पूरा ध्यान is there. And that's why I think it's most important to first understand what do you love, And I actually asked myself before I joined acting कि what is one thing. मैं business कर रहा था दुबई में, तो 3-4 साल में business कर रहा था, and I hated it. Every moment of it I hated it. I used to deal in steel and cement. तो रात के 3-4 बजे मुझे कॉल्स आते थे और बोलते कि भाई इस स्टील रॉड पे जंग लगा हुआ है, तो हम इसको ट्रक से उतारेंगे नहीं. Even though जंग हुआ जो steel rod है, it actually holds the cement together even stronger. So I have no idea, why don't you want it? So they didn't take it down, and I have to go there every night at 4 o'clock in the morning to download my steel. I hate my life, bro. I hated my life. Okay, so then I sat down and I said, और उस बीच में ना मुझे कभी मुझे मॉडलिंग के कुछ काम आ जाते थे, हर 2-4 महीने को, हर 5 महीने को. तो and I was very happy. Call time 3 बजे सुबह, bright. ऐसे खुश. शाम ही अलग रहता उस टाइम पे. Right, so then I was like, I asked myself, what is the one thing that would make me happy if I had to sleep and I had to wake up at 3 o'clock and I would do it happily? What would that be? And it was only this. At that time, I didn't know the art of acting. उस टाइम पे मैं मॉडल था. But then when I joined New York Film Academy and I understood filmmaking, I understood all the different aspects of filmmaking, understood acting as an art and not just I want to be famous, right? As an artist, right? It's very different. Correct. Absolutely different. You want to be famous is very different. But कि famous तो कोई भी हो जाएगा, बहुत easy तरीके हैं. Yeah. But मुझे अपना craft लोगों को दिखाना है कि मेरा ये craft है. And finding that is a blessing, first of all, and very rare. Not everybody gets the opportunity to, be able to find that passion inside their heart. And once you find it, trust me, your potential from here just touches the sky.
because you want to do it. करेक्ट कि दिल है हमारा कह रहा है. Exactly. जब लोग ना मुंबई आते हैं ना नॉर्थ से बेसिकली, तो लोगों को पता क्या लगता है, यार हमें ना हिंदी नहीं आती, हम लोग ना अच्छे एक्टर नहीं बन पाएंगे. मतलब हम लोगों को इंग्लिश नहीं आती, सॉरी, कि जब हम नॉर्थ से आते हैं ना कि हम लोगों को अच्छा, हिंदी तो मुझे नहीं आती थी. करेक्ट. Thank you. हम लोग जब नॉर्थ से आते तो हमें लगता है कि यार हमें इंग्लिश नहीं आती. और जो मुंबई का कल्चर है वहाँ पे एक है कल्चर कि इंग्लिश बोलना आपको आना चाहिए, और बहुत सारे लोग अपने ख्वाब छोड़ देते हैं. एक बहुत छोटी सी बात है कि हमें इंग्लिश नहीं आती, वो क्योंकि कई बार जिल्लत बोल सकते हैं, या कई बार वो मतलब उर्दू में सही एक टर्म है एहसास कमतरी, कि आप जब खुद को किसी और के कंपैरिजन में कम समझते हो, कि आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप अपना कॉन्फिडेंस कम कर लेते हो. मैं आपसे मिला, आप हिंदी में बात कर रहे थे, मुझे लाइफ में कभी ऐसा रियलाइज़ नहीं हुआ कि आप अबू धाबी में आपकी परवरिश हुई, अपब्रिंगिंग आपकी वहाँ पे रही है. तो ये जो आपने कैसे डील किया कि आपको तो हिंदी आपको भी नहीं आती थी, नहीं आती थी. और आज अगर मैं लोगों को बोलूँ कि था भाई को हिंदी नहीं आती तो लोग नहीं माने, क्योंकि आपने सीखी वो. तो वो आपने जो किस तरीके से सीखी, और ऑब्वियसली आपको भी थोड़ा सा रहा होगा कि यार जो कल्चर है हिंदी वाला, भाईचारा, ब्रो कोड तो फिर एक भाई भाई वाला, तो वो आपने कैसे सीखा मुंबई में? I read this book recently. It's by Ryan Holiday, and the book's name is called The Obstacle is the Way. And he has another book which is really beautiful. उसका नाम है Ego is the Enemy. तो keeping these two things in mind, जो भी आपने अभी कहा है, जिनको पता है कि मैं ये नहीं कर सकता, and then they don't take that step कि मैं जाके मैं pursue करूँ, मैं उसको follow करूँ. They're scared of the hard work, you know. And अगर आप hard work से आप घबरा जाते हैं, then you will never be good at anything. Okay, that's number one. Number two, like I said, that was not their calling. उनको स्टार बनना था, right? क्योंकि जब आपको and you're passionate towards acting और आपको बनना है, तो जो भी आपके weaknesses हैं, आप उसको आप देखकर आप बोलते हो कि मुझे ये नहीं आता, ये नहीं आता, ये नहीं आता, भाई इसके ऊपर मुझे मेहनत करनी है. It's very ये simple. सब सीखना है मुझे, बहुत Simple. हर दिन. There was another video I saw, one of my inspiring mentors. It said the power of 100. So power of 100 basically means you do 100 hours, the power of 100 hours. So 18 minutes a day throughout the year is equal to 100 hours. Okay. Can you put 18 minutes into English? 18 minutes. 18 minutes तो ऐसे निकल जाते हैं. Correct. But it's about the compound interest. It's about doing it हर दिन. Every day. You wake up and you have to do what you have to do. Right? तो अगर English हो, या martial arts हो, कोई भी या dance हो, या poetry हो, या कुछ भी हो. Can you invest 18 minutes? 18 minutes, 1 year is equal to 100 hours. You're telling me if you invest 100 hours in that subject with diligence and focus, you won't be able to learn it? आसानी से. You can, right? Correct, easily. Yes, easily. But nobody is willing to do it on a daily basis because they look at it as a long task. But आप वैसा देखो ही मत ना. It's about changing your perspective. It's about saying 18 minutes today. बस इतना easy तो है. That's it. You have 24 hours. Everybody, you have 24 hours. I have 24 hours. Everybody sitting across there have 24 hours. It's about how we divide it up. Right? And that's what I believe. I learned जब मैं यहाँ पर आया था, the first thing I learned was I heard this book 2010 में. हाँ, मेरी पहली फिल्म के बाद ये YouTube पे आया था, and it was I downloaded it. It was called The Power of Self-Discipline by Brian Tracy. Bro, वो तो मैं repeat पे सुनता था. Repeat. The whole months I was just listening to that book. The Power of Self-Discipline. And the number one rule of self-discipline कि आप अपने जो टाइम है, जो वक्त है, आप exactly आप बता सकते हो कि मेरा एक मिनट दिन में कहाँ गया है. And if you can do that, automatically you know where you're lacking and where you're wasting your time. Don't waste your time. That's a choice. We all have choices. Correct. So anybody like me जो बाहर से आया है, मुझे हिंदी नहीं आती थी,
पर मेरे अंदर वो पैशन था कि भाई मुझे बेटर एक्टर बनना है, मुझे बेस्ट एक्टर बनना है। ये बेस्ट एक्टर बनने के लिए मुझे क्या क्या करना होगा, उसका एक लिस्ट बनाया। एंड देन आई सेड कि मुझे एक्टर से अलग बनना है, तो और क्या करना होगा। You have to keep asking, those are self-reflective questions, right? And then you come up with a thing, and then you have to be man enough or woman enough to just get up and do it. You know, nobody's gonna, वो क्या बोलते हैं, वो आप पानी तक तो लेकर जा सकते हैं, क्योंकि कोई आपको पानी नहीं पिलाएगा, गले में कोई नहीं डालेगा पानी, आप क्या पानी लेकर जा सकते हैं। करेक्ट, गले में आपको खुद डालना पड़ेगा। तो that's it. You have the ways. आजकल तो इतना आसान हो गया है यार, YouTube है, कोर्सेज हैं, ई कॉमर्स के बुक्स हैं, मतलब आपको जो चाहिए, टीचर्स, ऑनलाइन टीचर्स, वर्ल्ड वाइड टीचर्स मिल जाते हैं आपको, जो बड़े नाम हैं, एग्जैक्टली, जिनके लिए लोग सीखने के लिए मरते थे कभी यार, हमें यूएस जाना है, ये क्लासेस, मिलेनियम जो डांस कॉम्प्लेक्स है, दे हैव अ कोर्स। आप जो भी टीचर आपको चाहिए वो आपको ऑनलाइन आपको कोर्स सिखा देगी या सिखा देगा। How amazing is that? You don't have to travel, you don't have to do anything. Correct. और एक जो फाइनेंशियल इशू भी था मनी वाइज, वो भी इतना कम हो चुका है कि आप महीने पर you can spend what like that। एक कोर्स आया था ना, मास्टर क्लास, उसमें दिग्गज लोग हैं भाई, from acting to gardening to storytelling, screenwriting, name it. करेक्ट, मतलब एक बहुत छोटी सी बात थी, $10। करेक्ट, हाँ बहुत सही करेक्ट बात बोल रहे हैं आप कि ऐसे जाकिर खान का मास्टर क्लास था। मतलब अगर आपको वैसे सीखना होता है नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि बहुत बड़ा नाम है, आप नहीं जा पाते। कोई न्यूयॉर्क का कोई टीचर है, आप नहीं जा सकते थे, नहीं अफोर्ड कर सकते थे, आपको $10 में मिल रहा है वो सब अभी जस्ट। सो तो फिर ये व्हाट इज द इशू? इशू इज हियर, इशू इज योर चॉइसेस। आपको करना ही नहीं है तो फिर होगा नहीं, you know, so there is no excuse. Everybody who comes and goes back, no, is because they look for an excuse, because they don't want to do the hard work. It's very simple, that's it. करेक्ट, बहाने सबके पास है, सिस्टम बनाना है आपको खुद। Excuses, right team? शाहरुख खान ने भी एक स्टेटमेंट दिया था, हम सब लोग बहुत बड़े फैन हैं, कि मैं लास्ट सुपरस्टार हूँ। आप एग्री करते हो? Yeah, man, superstardom is a title given by the audience because of the love that they give. And why do they give it? Is because of the kind of work that you put out there, right? And then how you behave with them, right? He's a superstar because of the kind of work ethic he has, man. And it resonates with me. He's a, you know, I mean, I can say he's a scorpion born. I'm a scorpion born, you know, and I like to kind of like hold on to that. Yet, you know, ki it doesn't matter about your star sign. It doesn't matter about anything. It matters what you do in those 24 hours every day. That's all makes you, bro. That's all. Trust me. I was just actually telling one of my friends also. Have you heard the story of the bamboo shoot, the bamboo stick? No? Okay, so the irony of the bamboo is basically you water it and water it. आपने डाला, आपने बीज डाली, आपने पानी दिया, फर्टिलाइजर दिया, पानी डाला, कुछ होता ही नहीं। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, और उसके बाद 5 साल के बाद इतना हो जाता है ऑटोमेटिकली, ऑल ऑफ अ सडन, एक रात में पुप, इट जस्ट कम्स आउट ऑफ द ग्राउंड, और उसके बाद वुफ, यू नो व्हाट आई मीन? व्हाई इज द क्वेश्चन? दैट इज लाइफ. अनलेस यू sow, you can't reap, right? So you need to keep sowing without, जैसे आप सोच ही नहीं सकते कि, वो बोलते हैं ना कि मेहनत कर, फल की चिंता मत कर, right? It's just another way of saying it कि भाई, you know, even my there was this book I read. Sorry, I read a lot of books, so I have to give you a lot of examples of books. But Will Smith had this one. He wrote his book recently called Will, and in that उन्होंने एक कहानी बताई उनके अब्बू के बारे में, ठीक है? So his father was an aggressive black man in the hoods, right? He had 2 sons. So one was Will and his elder brother, okay? He said every day you come back from school, this was when they were 10, 11 years old, both of them, okay? He said every day you come back from school, they had a really big picnic park, like a park. Their house was like a big park, right? They said you're going to get bricks and you're going to start laying the bricks and you're going to make this whole wall, okay? And then Will Smith, basically, he said, he's like, you want us to build
It's like building like the Great Wall of China, bro. Like, are you mad? You know, it's like big. And he's like, it's so huge. He's like, don't worry about the wall. Worry about how perfectly you can place one brick. At a time. Perfect. It needs to be perfect. How best and with full heart and full passion, just lay that one brick. Then go for the second. Don't think of that. Think of two. Then think of the third one. Think one by one. Right? By the time they reached 20, or I think 19 or something, they finished the whole wall. And then they looked at it. They looked behind and they said that, I remember thinking how difficult it was going to be to finish this wall. And now that we've laid the last brick, you know, the joy, the exhilaration, you know, the happiness, and just the sense of कि हमने accomplish कर दिया. And it is not impossible. When it seemed impossible in the beginning, all you needed to do was focus on one by one step. One by one. But do it in the best Regularly. way possible. Right? So that's what I try to do. I lack in so many things, bro. Right? तो मैं बस देखता हूँ कि how today can I become better in something? Just little bit. I can't do everything, but in something. You know, how can I be today? Let's say I did a shoot. How can I be more supportive to the people around me? Or how can I get better poses? You know, experiment with things. So I learned that, you know. So every day is some kind of learning and it's a pile up. And that's what I believe. मैंने कल रात को इंस्टाग्राम पे अपनी स्टोरी डाली थी कि कुछ नया सीखना भी कामयाबी होती है. या तो ये सही कहा तूने. एकदम करेक्ट. एक्टर्स की ना कुछ प्रॉब्लम है जो नॉर्मल दुनिया को नहीं दिखती. एक्टर्स की तो बहुत प्रॉब्लम्स है. हाँ, मतलब लेकिन ऑब्वियसली बहुत सारी है. पर कुछ है जो नॉर्मल दुनिया को नहीं दिखती. हाँ. बड़े एक्टर्स की कुछ प्रॉब्लम्स है. हाँ. जो नॉर्मल दुनिया को नहीं दिखती. नहीं, मतलब मुझे नहीं पता होगा फिर. नहीं, ठीक ठाक एक्टर्स. नहीं, बड़े एक्टर्स की कुछ प्रॉब्लम होती है. जैसे कि वो आप ही बताओगे ना. I don't कि know. कुछ प्रॉब्लम ऐसी कि वो दुनिया को नहीं दिखती, बट हाँ ये भी हम लोग फेस कर रहे हैं. Designer outfits, man. Where can we get the next designer outfit? Free of cost is the next big question. Man, I think we bring upon problems onto ourselves, right? And but like I said, there are problems that you should take on, like how do I become better at something? How can I learn more? You know, but the other problem is small things which people like, you know, kuch khana nahi aaya, yeah, something went wrong, and then they start taking, they make big issues out of small issues. So I feel I'm not like that. I'm very, क्या बोलते हैं, I understand कि everybody's trying to make the best, and I am here to help you make that. Otherwise, if I'm not going to help, then why am I here? Right? Why did I say yes to this job? If I'm not going to help you, if I'm going to come to give you problems, then I believe that's wrong. Correct. I believe talking and with love, lots of things are possible. And being, क्या बोलते हैं, like a team. कल ही ना मैं एक ऑडियो बुक सुन रहा था, तो उसमें एक बहुत सिंपल बात थी कि आप किसी कंपनी में, आप कहीं भी हो, आपके पास ऑप्शन होता है, आप टीम प्रॉब्लम में हो या आप टीम सॉल्यूशन में हो. प्रॉब्लम्स तो होंगी. एक होगी यार ये है ऐसी दिक्कत है, बट आप किस में हो, वो दिक्कत सुनाने में, आप टीम को सॉल्यूशन वाली टीम में हो. Yeah, that's again choice. करेक्ट. हाँ, मैं वो इसी बात को करना. I have a couple of people in my life who keep talking about problems. Correct. You know, they keep revolving around the same issue, but they're not willing to take in, मतलब वो टीम सॉल्यूशन नहीं बनना चाहते. वो solution, वो यानी they want to really nichodify the problem and keep talking about the problem when you can just say, okay, problem हो गई है ना भाई. करेक्ट. सॉल्यूशन क्या है, आगे बढ़ते हैं. What's the solution? Let's move on. Why are we discussing this for 2 hours? हो गया, खत्म हो गई बात. You know, they would gossip about other people, then they'll say negative things about other things and this and that. Why didn't it happen? Who did it? हो गया ना भाई, अभी क्या करें? Next, how can we get this to work? Or how, if it can't work, let's try a different strategy. You know, but उस पे ज़्यादा आप सोचोगे ना,
I mean, there are problems where I have faced जहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा सोचता हूँ, पर मेरी बेस्ट चीज़ ये है कि मैं जाके सो जाता हूँ। जैसे मैं सोता हूँ और मैं उठ जाता हूँ, मैं बोला प्रॉब्लम, व्हाट प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, लेट्स गो, बी हैप्पी। नींद अपने आप में बहुत बड़ा सॉल्यूशन है। It is, trust me, I love sleeping on problems. जब भी कोई प्रॉब्लम आता है, I think about it, I say what should I do? I ask myself and then I fall asleep. And most of the times when I get up, I'm more calmer and also वो प्रॉब्लम फिर प्रॉब्लम नहीं लगता उसका, मतलब हल्की नहीं लगती है कि हाँ ठीक है, इसका सॉल्यूशन है इजी। हाँ, और वो एक सोल्यूशन भी आ जाता है आपके दिमाग में सोने के बाद, बिकॉज एवरीथिंग सेटल्स डाउन इन योर माइंड, यू आर नॉट टू हैसल्ड, नो एंजाइटी, you know. So I guess, you know, rest and, like I said, just breathing and just being by yourself in the times of crisis is very important. हमारे ना एक पॉडकास्ट में आई थिंक वो याद नहीं आ रहा, किसी ने ये बात बोली थी Oops. कि मुझे 4 बजे लगा कि मैं सुसाइड कर लूँगा, और मैं लिटरली रस्सी वस्सी टांग ली थी और मेरे को नींद आ गई, और सुबह उठ के मेरे को हंसी आई बस। Bro. ये कौन सी कहानी है भाई? हाँ, no, but thank God he slept then, right? नींद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। करूँगा, रुक जा थोड़ा। अब मैं आपसे कुछ नाम लूंगा और आपको एक सेंटेंस में उनके बारे में बताना है। Okay, do I know these people? हाँ, Okay. आपने उनके साथ काम किया था। अच्छा, okay. श्रद्धा कपूर, Lamborghini, owner of Lamborghini. हाँ। सबसे फ्रेश मेमोरी। बट एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि वो पहली वो एक्ट्रेस थी जिसके साथ मैंने काम किया है, पर शी वॉज ऑलवेज टीचिंग मी कि इंडस्ट्री में आपको बिहेव कैसे करना है। बिहेव मतलब आप प्रोडक्शन से क्या मांग सकते हैं, क्या नहीं मांग सकते, यू शुड डू दिस। सो शी वॉज अ वेरी हेल्पफुल टीचर जब मैंने शुरुआत की थी, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी 1-2 फिल्में की, इंडस्ट्री से हैं, उनको ज़्यादा पता था और मैं बस नया फ्रेश ऑफ द बोट। तो शी वॉज वेरी काइंड टू ऑलवेज गिव मी सम काइंड ऑफ एडवाइस जहाँ पर भी मुझे यूज़ हो, एंड दैट वाज वेरी काइंड ऑफ हर। अदिति राव, मैन अभी ताज में हमने साथ में तो काम नहीं किया है, बट आई नो दैट वी बिकम रियली गुड फ्रेंड्स, क्योंकि सिद्धार्थ जो है वो I know him for a while now, and they're getting married. So Aditi, I would just have to say that she has the most gorgeous eyes. क्या बात है। नसीरुद्दीन शाह सर, पापा तो अब्बूजान। मैं ये बोलूँगा कि नसीर सर has taken me to the side and has given me a kiss, not on the lips, I mean given me a kiss on my cheek. Alright, don't take it the wrong way guys. Okay, and he said कि बेटा तूने बहुत अच्छा काम किया है और हम दोनों साथ में एक फिल्म करेंगे। क्या बात है। Okay, and coming from him, I have it on record, and then I kissed him I kissed him on the cheek after that, and then I'm looking for a script right now कि अगर उनके साथ करने का एक मौका मिले जहाँ पर you know some real intense scenes, you know, I'm really looking forward कि वो स्क्रिप्ट मिल जाए और हम एक फिल्म साथ में करें। जिमी शेरगिल, जिमी भाई के साथ हमने रांची डायरीज में काम किया था यार, बहुत टाइम हो गया, पर जिमी भाई जो है, आई मैन, यू नो व्हाट आई ट्रूली फील एंड आई वांट टू टेल अबाउट हिम, ही वाज सच अ हैंडसम गाय मैन। वो मेरे को बहुत पसंद थे बचपन से। जब वो मोहब्बतें में आए थे, उनका चार्म है अपना एक बहुत। I saw him like, bro, this guy is fucking gorgeous. Correct. This guy is so handsome. Like, उसने कमर्शियल फिल्म में क्यों छोड़ दी? You know, but of course he's an incredible actor. Correct. But I really, really wish that, you know, I could have seen him in more movies, commercial films, and I think he was really good. Yeah. Divya Datta. Gippy. दिव्या दत्ता, oh yeah, I'm actually recently, अभी हाल ही में मैं मिला था, मैं कहाँ मिला था? सोहो में मिला था, and she remembered our times. I would have to say that she is very kind, क्योंकि वो हमेशा अपने घर से मेरे लिए खाना लाती थी। क्या बात है। And she would always on, you know, जब हम शिमला में थे तब नहीं, पर हम जब मुंबई में शूट कर रहे थे, she would always come and eat with us, and उस टाइम पे मैं नया था and she was established, so I feel that was a very kind gesture of her. जो आज आप और लोगों के साथ करते हो भाई, जो आप सीखते हो, जो you know you find the good things from people, and मुझे ना एक चीज़ तो डेफिनेटली मुझे पता है कि लोगों को ना घर का खाना बहुत पसंद है, स्पेशली जब मैं अपने घर का, मम्मी ने बिरयानी बनाती है और मैं सेट लेकर जाता हूँ, तो वो
सफा चट हो जाता है। क्योंकि आप जब तक घर में थे, घर के खाने की आपको इम्पोर्टेंस समझ नहीं आ रही थी। जैसे आप बाहर का खाने लग, मतलब शहर छोड़ के आ गए, परिवार से दूर हो गए, फिर आपको समझ आता है कि हाँ यार, ऐसे ही लोग क्यों बोलते हैं मम्मी का खाना। या आप साउथ से हो? साउथ में किस जगह से? पापा जो हैं वो तमिलनाडु से हैं और मम्मी जो हैं वो कर्नाटका से हैं। और साउथ की मूवीज करने की कभी मन हुआ आपको ऐसे? साउथ फिल्म्स वो तो हमारे डीएनए में है ब्रो। बस एक यहाँ पे मैं जानता हूँ कि 2025 में आई विल बी डूइंग अ रियली बिग साउथ मूवी। आई नो, आई हैव अ फीलिंग। और अपने पापा के लिए और मामा के लिए तो मुझे करना ही होगा। आमीन बोलते हैं ना? आमीन सुम्मा आमीन। हाँ आमीन। लास्ट क्वेश्चन आपसे। लाइफ में आपने बुक से बहुत सीखा है, आपने पॉडकास्ट, आप हर वक्त कुछ ना कुछ सीखते रहते हो। मैं आपके घर भी आया था तो इतनी बुक्स हैं, सब कुछ, मतलब सीखने के लिए बहुत कुछ है। ठीक है, आपसे 5-10 मिनट मिलोगे तो आप 2 बातें नई सीख के अपने पास लेके जाओगे। तो बहुत, मतलब ऐसे लाइफ में आपको ऐसा कि जहाँ मैं सीख पाऊँ, मैं कुछ सीखना है, तो आपकी लाइफ का एक बेस्ट लाइफ लेसन जो आपको आज सबको बताना कि मेरी लाइफ का, मेरे से सीखते रहना सब कुछ, बट मेरी लाइफ का बेस्ट लाइफ लेसन है जो आपके बहुत काम आएगा। मैं जब मैं यहाँ पर आया था ना मुंबई, तो मेरा एक सपना था कि मैं ऑफ कोर्स सबसे बड़ा बनूँ, सबसे नहीं मतलब बड़ा बनूँ और बहुत पैसे हों, दिस एंड दैट। और जैसे जैसे हम लोग काम करते रहते हैं ना, इतने रिजेक्शंस मिलते हैं and you fail a lot of times, you pass also but you fail a lot more times। फिर आप रोते हो, फिर आपको ऐसा लगता है कि मैं इंडस्ट्री छोड़ के मैं निकल जाऊं, and then there's only one voice most of the time, at least for me, where it was nobody but my mom। और मम्मी आके कहती है कि तू क्यों रो रहा है? मैं बोला ये सब हो गया, and I'm just so sad, I'm crying, and then she वो ऐसे वो नहीं करती। She comes and she hits me on my hand or something, and then she's like, रोने से कुछ नहीं होने वाला, you want it, go out there and get it, right? And that my whole perspective of having a goal for selfish reasons, I want to be this, I want to be that, I feel it all changed in my mind over the years। और अब एक ऐसा हो गया कि I want to do it for her। I want to do it because of all the sacrifices that I've seen her go through। I've seen her not eat food, I have seen her sell all her jewelry, her truck, I've seen her go walking, okay, I've seen her like in Dubai, and doing a man's job of recruitment and laborers and construction. It's a man's job at that time, 90s 2000s, and all was men's job। आजकल भी ज़्यादा लड़कियां नहीं हैं उस इंडस्ट्री में, right? So she was one of the pioneers and she made it, and she from zero, I've seen her dedicate herself so much in that, because there was one time she told me the story. I have to tell you the story. It's touched my heart. I don't want to badmouth any part of her family, but people when they're rich, and she had stepbrothers and stepsisters, and one time उनकी जो स्टेप ब्रदर की जो बेटी थी वो मेरी मम्मी की उम्र की हैं। सो they've all passed away now, but when she was young they got invited, because मेरी मम्मी बीजापुर में रहती थी और ये लोग भुवनेश्वर में रहते थे। So they got invited, her and my mom and her father, who's also that guy's father, all right, to go and visit them for the wedding, okay? My mom went, father went, they went there, and the wife of her stepbrother basically said, हमारे घर में जगह नहीं है, इनको वो कुत्ते वाले रूम में रख देना, जहाँ पर the dogs used to stay outside the house। They put like a charpai for them, and it was like stinking of dog, bro. It was a dog house, right? And they actually made them stay there. And my mom said that day she was 18 years old, she said. And that day, and after that, she created a complete empire for herself. Okay, she had zero. So my only thing is, ki, always if my advice is there, wherever you are in life, you might be nothing right now, or you might be whatever, a superstar later, but always work
from the thought that you are zero. Because if you think that you have made it, and if you think you are it, you're done. You are zero. Every day we wake up, we start from zero. You know, and that's how it's supposed to be. ऐसा नहीं कि मैंने कर लिया, मैंने flip मार लिया, हो गया, मैं gymnast. नहीं. कुछ नहीं. All that is gone. It's done. It's out. हो गया. कल गया, बात गई, रात गई, बात गई. आज क्या होगा? What is today? You know, people say that I was fit. I used to play cricket. I used to read a lot of books. What are you doing today? Is the question. So start from zero would be my advice to all the young people. कि कुछ बन गए हो तो भी जीरो से ही शुरू करना है, कुछ नहीं हो तो जीरो से ही शुरू करना है. और इसके बीच में ना मुझे एक बहुत अच्छी बात लगी कि हम लोग हमेशा कामयाबी की बात करते हैं, तो हम अपनी कहानी बताते हैं कि यार मैंने ऐसे किया, मैंने, अरे मेरी मम्मी ने भी मुझे काबिल बनाने के लिए आज इतना कुछ सहा है, इसलिए आज मैं यहाँ तक पहुँच पाया कि मेरे पास मौका था कि मैं एक्टर बन पाऊँ. कि माँ की कहानी भी तो थी ना, माँ ने भी तो बहुत मेहनत की. You would never be here, ना, जब तक आपके parents, you're always left at a certain, you know, maybe your parents leave you from zero, maybe they leave you at 5. Maybe my mom left me at 20. But maybe some people are at 5. But from that 5, how can you make that 100 times more? 100 times. That is on you. You know, not everybody has the capacity ki haan, theek hai, everybody's well off or everybody. No, my mom was not well off. She started from zero and she created herself. So it's not impossible. But I've seen her sacrifice. I've seen her sacrifice food. I've seen her sacrifice everything that she was wearing, her transportation. She never went back to Bhubaneswar in her life. And she was the only person when all her brothers were on the deathbed, right? She was the one for like years, 5 years, she took care. She never went back, but she paid for all their hospital bills. She paid for everything. And the same people's wives had told her to live in the doghouse. That's also having a big heart. Correct. हाँ, वो चीज़ें ना आप संभाल के, लोग कितना भी बोले कि भूल जाते, but वो बातें ना, it stays, man. And that is what makes you. You know, that is what makes you. Like, it made me, like, what made me was everybody in Dubai, who my people, all my friends, said that you can't do it. The one person who was my girlfriend at that point of time, she to 100% said that you suck. You cannot do anything in your life. Just stay here and do this small business or work in a hotel or something. And that is it. And then we'll get married. And but you can't become an actor. Breakups, heartbreaks, insults are some of the only things which stay with you throughout your life. You might forget the good moments, but you will never forget the bad moments. Okay. Because those bad moments drive you, right? And that's very important. Keep the bad moments very close to your heart, you know, because good will come and then you start like, oh, I have this now, I have a big car, yeah, whoa. But stick, like I said, how can you stick to that zero? Is by keeping all those insults in your heart every day. That I know where I came from and think of all the times when you didn't have anything. That'll make you. कि वो जो जिल्लत मिलती है ना आपको लोगों से, वही आपको कामयाब बनाती है. एक छोटा सा गिफ्ट है आपके लिए रखा हुआ. आई होप आपको पसंद आएगा. Yes. Yes. मैंने इंस्टाग्राम पे बैठ के फोटोज ढूंढी आपकी, मैं कौन सी बेस्ट फोटो होगी. Oh. मेरे को आप बहुत सीरियस ऐसे कि हर फोटो पे सीरियस देना कि मैं हंसता हुआ आदमी दिखना चाहिए मुझे. So this one is for you. Oh man, look at this. Sexy. Photo credits, Adhyan. Stone, paper, scissor. और मैं जीत गया. तो अब आपको मैं select करूँगा. Talk in Bihari. अरे. Talk in Arabi. Your fans are gonna blah 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 Habibi. Do silly dance while singing alphabet. Chal. A B C D E F G H I J K. अंकल ये कौन है? L M N O P Q. ये शबनम का आशिक है. R S T U V W X Y Z. Good luck, brother. Do your best impression of a famous celebrity for a minute. For a minute. चल तेरे को कम दिया चल. कि ऐसा नहीं मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़कर नहीं लाता.
But impression, you have to make his impression. Ranbir Kapoor ka impression. Hey! Like, that's not impression, but that's Muthan Chakraborty. Impression कैसे लाऊंगा? Just shout at Sunny Deol. ये सब ना? ये कौन है? सनी देओल. तो क्या नाचो मैं? Forget Sunny. ये रणबीर कपूर ने कब किया? Hold it for this guy. Up, top. Call your recent co-actor and talk in just animal voice. लास्ट एक अभी मेरे को करने दो ना ये अगर किस्मत. अरे चल आजा तेरी बारी. ओ Sing any song in Disney voice and for your opponent and post it on your Instagram story. Let's go! ये दिल हो गया मुझको ओ मेरे यारो संभलना मुश्किल हो गया. क्या बात है, क्या बात है. थैंक यू. थैंक यू सो मच भैया, आपने हमें स्पेशल टाइम दिया अपना और मुझे सच में बहुत अच्छा लगा. मुझे आज पता लगा कि पहले तो बुक्स पढ़नी है लाइफ में, बहुत काम की चीजें होती हैं. हाँ, बुक्स में. One. और रोज सीखते रहो कुछ ना कुछ. Two. और अगर एक्टर बनना है अच्छा तो बेटर पिंग पोंग खेलो. बेटर पिंग पोंग खेलो. हाँ, और कोई बुलाए तो ऐसे हर टाइम आना नहीं चाहिए क्योंकि कुछ भी हो सकता है. और लेकिन ओवरऑल मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिलता है. मैं जब भी आपसे मिलता हूँ, मैंने पहले भी बोला कि कुछ लोग होते हैं आप उनसे जब भी मिलोगे ना तो 2 नई बातें सीख के जाओगे. ऐसा पर्सनैलिटी आपको, और आप लाइफ में आने वाले जो भी प्रोजेक्ट कर रहे हो टच वुड आप लाइफ में बहुत कमाल कर दो, धमाल कर दो. और हम बोलें कि अरे अपने भाई हैं. और नीचे इंस्टाग्राम अकाउंट्स आ रहे होंगे तो आप फॉलो कर दो और प्लीज सब्सक्राइब BLive स्टूडियो. और ऐसे हक करके हम खत्म करेंगे. Done. परफेक्ट. Thank you, brother.